Now, the operations that could be performed on sets, starting with union of sets. In simple words, union is the process of joining something, the action of joining two things together. So, union of sets is a set containing all the elements of A and B is called the union set of A and set B. And the union of sets is denoted by this U sign. Let's see an example. Now, two sets are given and we are required to create a union set for both the sets. Set A 1, 3, 5, 7 and 9 and set B 0, 3, 6 and 9. Now see the union set. यूनियन सेट में 0, 1, 3, 5, 6, 7 एंड 9 हमने दोनों सेट्स को मर्ज करके लिख दिया, ज्वाइन कर दिया दोनों को. लेकिन एक चीज, रिमेंबर वन थिंग, द एलिमेंट दैट इज कॉमन टू बोथ सेट्स इज रिटन वंस इन द यूनियन सेट, नॉट ट्वाइस. अगर एक एलिमेंट जैसे इन सेट्स में सेट ए में 3 है एंड सेट बी में भी 3 है, सेट ए में 9 है एंड सेट बी में भी 9 है, यानी 3 and 9 आर द कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट. सो जब हम यूनियन सेट बनाएंगे तो हम 3 को भी एक दफा लिखेंगे एंड 9 को भी एक दफा लिखेंगे. कॉमन एलिमेंट्स को हम 2 दफा नहीं लिखेंगे. इनफैक्ट वी विल राइट देम वंस ओनली. नाउ सी द वेन डायग्राम. Two circles which are overlapping. Now you may recall overlapping sets की Venn diagram. हमने क्या पढ़ा था कि जब दो सेट्स में एलिमेंट कॉमन होंगे तो जो डायग्राम बनेगी उनमें जो दोनों सर्कल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बने हुए होंगे. सो दीज बोथ सेट्स वर ओवरलैपिंग सेट्स. तो डायग्राम में दोनों सर्कल्स ओवरलैप हैं. So 3 and 9, which were the common elements, are written in the overlapping part. And जो different element थे, जो set B में 1, 5 and 7 है, वो set A में लिखे हुए हैं, and set B में जो 0 and 6 थे, वो हमने set B के circle में लिखे हैं. So these both sets are representing A union B. Now you might be thinking, why these both circles are shaded? Because ये दोनों circles पूरे आंसर that is A union B दोनों उसको represent कर रहे हैं. यानी कि A union B के जो सेट में जितने elements हैं वो इन दोनों सेट्स में आए हैं. कुछ एलिमेंट सेट A के थे, कुछ B के थे, जिनको हमने यूनाइट करके एक सेट बनाया. तो इन दोनों पे जो कलर्ड पार्ट है वो A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है. आई होप बात आप लोगों को समझ आ गई होगी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड ऑपरेशन. नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन इज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट. A set containing the common elements of A and B is called the intersection set of set A and set B. एक सेट जिसमें A and B दोनों के common elements होंगे, that set is the intersection set of A and B. और intersection set is denoted by this sign. Now let's see an example for intersection of sets. Set A is 1, 3, 5, 7 and 9 and B is 0, 3, 6 and 9. This is same as last example. Now intersection common elements को अलग करके एक सेट में लिखना है. That means इन दोनों सेट्स में common elements are 3 and 9. So जो इंटरसेक्शन सेट बनेगा उसके एलिमेंट्स होंगे
3 and 9. These both elements will represent the intersection set of set A and set B. Now look at the diagram. Diagram is same as previous one, overlapping. Why overlapping? Because both sets are intersecting each other. Both sets have common elements between them. That is why the diagram is overlapping, so that the overlapping part can represent the common elements. So 3 and 9 are written in the overlapping part. That means 3 और 9 वो elements हैं जिसकी वजह से ये दोनों intersection sets हैं. And different elements in set A and B are written in first circle set A 1, 5 and 7 and second circle B, that is 0 and 6. Now A intersection B is represented in the shaded part. जो हमारा आंसर होगा वो हम shaded part में show करेंगे. So the shaded part is the overlapping part of the diagram. So 3 and 9 are the part of shaded part, and this is the answer. Now the third operation, that is difference of sets. Difference is subtraction. So the difference set of any two sets A and B is the set of the elements of set A which are not in set B. It can be written as A minus B or A divided by B. So difference set क्या है? Difference set में वो elements आते हैं set A के, यानी कि जो first set है उसके वो elements आएंगे जो हम set B में से minus कर चुके होंगे. यानी set A and set B के common elements को हम minus करके जो elements set A में remaining होंगे हम वो लिखेंगे. Intersection में we were writing the common elements, but here we are subtracting the common elements and writing those elements which are left in first set. यानी कि set A में जो elements बच जाएंगे वो difference of sets में आएंगे. Let's see the example. Set A equals to 0, 1, 2 and 3 and set B is 2 and 3. Now taking the difference between both the sets. Set A and set B में से जब हम 2 and 3 को subtract कर देंगे, that means जब हम इसमें से 2 and 3 को minus करेंगे वो फिर हमारे पास set A में remaining 0 and 1 रह जाएगा. So A minus B will be 0 and 1. Now see the Venn diagram. Venn diagram is again overlapping. Why overlapping? Because both the sets had common elements between them. So 2 and 3 were the common elements. So in overlapping parts we write 2 and 3. फिर set A में 0 and were the different elements. So हमने set A के जो circle में हमने 0 and 1 लिख दिया. Now set B has nothing different. No element that was different. So हमने set B की side में कुछ भी नहीं लिखा और 2 and 3 हमने overlapping part में लिखा जो set A and set B दोनों को represent कर रहा है. Shaded part was 0 and 1. Why 0 and 1? Because 0 and 1 was the answer. It represents difference between A and B. So A minus B is 0 and 1 and shaded part represent A minus B. I hope you all understand this. Now fourth operation, that is complement of a set. Now what is complement of a set? If a set is a subset of a given universal set. Remember universal set?
the set that takes all the elements in consideration. Then the set of elements not in A is called its complement set. It is written as A complement. This is written as A complement. This is the sign of complement. Now, what is complement? Let's look at an example. In this example, universal set that is represented by U is 1, 2, 3, 4 till 10. And set A is 2, 4, 6 and 8. Now, A complement set create करना है. How will we do that? A complement means U minus A. Difference between universal set and the set A is A complement. लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि डिफरेंस क्या होता है. डिफरेंस होता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने के बाद सेट ए में, यानी कि सेट ए नॉट, पहले सेट में जो एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे आंसर में. यानी कि डिफरेंस में पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स आते हैं. सो ए कॉम्प्लीमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड द गिवन सेट. सो in this example, we will eliminate the same elements. What are the same elements? 2, 4, 6 and 8. After eliminating these elements, we are left with 1, 3, 5, 7, 9 and 10. So, answer for A complement will be 1, 3, 5, 7, 9 and 10. Look at the Venn diagram. Venn diagram universal set की rectangular shape में बनेगी. Rectangular shape which represents universal set. And दूसरा set हमारे पास given है set A. So set A subset है universal set का. So set A will be located in the rectangular shape. That means set A is the subset of universal set. Now, the elements which were part of set A will be written in the circle which represents A, and the remaining elements of universal set, that are 1, 3, 5, 7, 9 and 10, वो हम कहाँ लिखेंगे? Rectangle में लिखेंगे, because they are not the part of set A, they are only the part of universal set. So, हमने इन सारे एलिमेंट्स को बाहर लिखा. नाउ द शेडेड पार्ट विच इज द रेक्टेंगुलर शेप, नॉट द सर्कल, रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट. यानी कि जो हमारा आंसर है वो शेडेड पार्ट में हमें नजर आ रहा है. सो शेडेड पार्ट इंक्लूड्स 1, 3, 5, 7, 9 and 10. आई होप यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी.